please pay attention. So we are discussing river swimmer, और स्विमर की जगह कभी कभी बोट भी आ जाता है, स्विमर प्रॉब्लम्स. ठीक है, रिवर स्विमर प्रॉब्लम्स. So we start with this very good example. ठीक है, a very interesting one also. These are the river beds, river banks of river. समझते हो ना? Yes. These two brown lines are representing the two banks of the river. Okay. Now a person starts from this point A, and he wishes to reach the exactly opposite side of the bank. He want to reach point B. He want to swim across this river and want to reach point B. This is the swimmer. Okay. The river is flowing. The river is flowing from left to right. Okay. The river is flowing from left to right. So this is representing velocity of river with respect to ground. My question to all of you is, in which direction the man should swim? Towards the left of AB or towards the right of line AB to reach point B? Right. फिर से I'll repeat. On which side of line AB the man should start swimming so that he reaches point B? Sir, Left. left. टाइप करो, अपने आंसर्स टाइप करो जरा. मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग क्या क्या बोलना चाहते हैं. कोई राइट वाला है? सब लेफ्ट बोल रहे हैं. कोई राइट वाला है? मिशिका साक्या ने राइट बोल दिया, देखो. और कोई? नीलाभ राइट. अरे भाई, एक बात बताओ, तुम लोग स्विमिंग नहीं करते हो क्या? कभी सीखा नहीं स्विमिंग? नीलाभ किया है ना सर. करता है स्विमिंग तू? फिर कैसा तुम खराब स्विमर है बे. अगर इधर जाएगा तो ये नदी क्या करेगी तुम, और इधर पुश करेगी, हाँ या ना? हाँ. तो तुम बी पर कभी पहुंच पाओगे? नहीं. फिर ओ ओके ओके. मुझे कॉमन लगा सेंस. ये साइड पहुंचना है. सॉरी. मिशिका मिशिका साक्या, समझ आया तुमको कि नहीं आया क्या बोला मैंने? Yes, sir. फिर तो वी हैव टू स्विम, द मैन हैज टू स्विम इन दिस डायरेक्शन so that this is the velocity of man, right? ये छोड़ देते हैं अभी क्या है ये. तो the man will start swimming in this direction and the river will always try to bring it on this line AB. So to a man standing on the ground, ध्यान से सुनो बेटा, मत लिखना है, कुछ भी मत लिखो अभी, समझो बस. To a man standing on the ground, the swimmer seems to be moving along line AB. The swimmer is moving along line AB. So this is the velocity of man. This is the velocity of man with respect to ground, because this observer is observing this man moving along this line. Understood? No, All of sir. you. हैं? Yes. कौन No, नो बोला? sir. कौन हो तुम? सर वो ऐसा देखेगा तो उसको ऐसा आड़ा टेढ़ा जाते हुए नहीं दिखेगा क्या? देखो, अनपढ़ टाइप की बातें सुनो मेरी बात. हाँ. तुमको क्या समझ में आया वो बताओ. ऐसे देखेगा वैसे देखेगा मत समझो. ए और बी कहाँ है? ग्राउंड में है कि बाहर है? बाहर है, रिवर के अंदर है. ग्राउंड में है ना? अच्छा, हाँ. ग्राउंड में ही है ना. नदी कहाँ बनेगी? वे जमीन पे बनेगी, हाँ हवा में हाँ, बनेगी?
जमीन पे। क्या अनपढ़ टाइप बातें करती। ए बी, समझ आया? हाँ सर। तो ए बी ग्राउंड पे 2 पॉइंट है। तो अगर अब आदमी ए से बी जा रहा है, इसको तो अगर बी पे पहुंचना है तो इसको तो यही दिखाई देगा ना कि ए से बी जा रहा है वो। अच्छा हाँ। तो ये वेलोसिटी क्या होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हुई ना। ओ समझो। हाँ। तो अब ये जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी, ये जो डार्क ब्लू लाइन है, लेट्स से दिस इज सम वेक्टर एक्स वेक्टर। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। ये मास्टरों को 25-25 साल पढ़ाने के बाद भी समझ नहीं आता है, इसलिए ध्यान से सुनो। ओके, दिस इज सम एक्स वेक्टर। ओके, ऑल ऑफ यू, कैन आई ऐड वेक्टर एक्स टू वेक्टर आर जी, वी आर जी? Yes, sir. We can always add these two vectors, right? And this is vector vmg, yes or no? Yes, All sir. of you. Yes, sir. यस। So x vector is equal to vector vmg minus vector vrg, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Now can I write vector x as vmr? Because you can see here it is following the rules of relative velocity, subtraction of the second point with respect to the first, from the first point with respect to a common frame of reference, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी में सिखाया था ना ये, याद आता है नहीं आता है सबको? Yes, हाँ sir. पक्का ना? कोई डाउट है Yes. किसी को तो पूछ लो बे बच्चों। No, sir. सबको डाउट सर नहीं है लास्ट किसी? टाइम तो ऐड किया था ना। अरे यार, फिर यार कौन है यार, ये कौन है बे? कौन सर लोग चले आते क्लास में मुंह उठा के? बगीचा समझ के घूमने आती हो क्या? नहीं सर। क्लास में तुमको कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करवाया होगा, 10। कॉपी में देख जरा, रिलेटिव मोशन सिखा रहा था तब, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कहाँ कहाँ से चले आते? बेटा, फर्स्ट से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं। VAO माइनस VBO क्लास में करवाया है ये। हाँ सर। हाँ, नहीं आता है पढ़ के आया करो क्लास में। सर मैंने देखा अभी आपने सब किया। नहीं नहीं, तुम मत देखो, तुम बिना देखे ही पहुंचो क्लास में, ऐसे ही चली आओ, हम्म, बगीचा है तो तुम्हारा। नहीं। BMC का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बगीचा है, कोई भी आ सकता है। आ नहीं जाओ। सर। हाँ हाँ, और तो दिस इज VMR। ओके, velocity of man with respect to river. Anyone is having any doubt in this discussion till now? नो सर। No, ओ सर। No, sir. भाई absolutely no. देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, प्लीज पूछ लो। कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या हो, देखो ये लड़की बहुत होशियार है, कृषा जो है, कृषा नथानी बहुत होशियार लड़की है। इसका कारण क्या है? ये कोई डाउट इसका बचता नहीं है, कि तुम सबके टाइम के एक्सपेंस पे अपने डाउट खत्म कर लेती है। तो तुम समझो, वो सब पूछती है, वो अंड बंड जो मुंह में आता है पूछ लेती है। मैं बोल दो क्या है, मास्टर तो बताएगा, गाली देगा, डांटे, मैं उसको डांटता कितना हूँ, देखो डांट पड़ती है कि नहीं उसको। पर वो कभी तुम देखे हो रोते हुए उसको? देखो उसके सारे दांत दिख रहे होते हैं। तो इससे सीखो, सवाल पूछना। रिसीविंग तुम्हारी बहुत हाई होनी चाहिए, योर रिसीविंग शुड बी वेरी हाई, राइट? यू शुड ऑलवेज आस्क व्हाई दिस इज हैपनिंग, हाउ इट इज हैपनिंग। इवन इफ यू फील कि यार कोई भी कंफ्यूजन है दिमाग में, डोंट लेट इट बी देयर, राइट? प्लीज आस्क। तो इवन इफ यू थिंक यार डांट पड़ जाएगी, इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डांट पड़ के किसको याद रहता है? अगली क्लास में सब डांट खाते रहते हैं यार, है ना? आ जाओ। तो नाउ यू नो व्हाट इज VMR, व्हाट इज VMG, व्हाट इज VR। तो ये VMR का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय VMR? सो नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया था तुम्हें वो बताता हूं। फाइंड द एंगल इन विच द मैन शुड स्विम। फाइंड द एंगल with the vertical, in which the man should swim to reach point B.
ठीक है. Given data is velocity of river with respect to ground is equal to velocity of river with respect to ground is equal to 3 kilometers per hour. ठीक है. And velocity of man in still water is equal to 4 kilometers per hour. तो क्या निकालना है तुमको? क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा. You have to find this angle. Let's say this angle is some angle phi. All of you understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. What is VRG? Magnitude of VRG is given to you. It is 3 kilometers per hour. I hope all of you understood this. Yes. विहान Yes, समझ आ sir. रहा है बेटा? Yes, sir. ईशा ईशा वेंकटरमन समझ आ रहा है Yes, आपको कि sir. नहीं आ रहा? Yes, sir. हाँ. ख्याति Yes, sir. समझ आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Now we want to discuss what is this velocity of man in still water. Now my question to all of you is it VMG or is it VMR? This one, this represents which one of these two velocities? VMG or VMR? Type your responses in the comment window. Do it quickly. Type your responses in the comment window. This is very, very, very important. इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार. इसको ध्यान से सुनो, समझो. Okay? Mr. Jagannath says it is okay. ये देखो, कौन है वीएमआर वाला? कृषा नथानी. हाँ sure. बताना जरा किस खुशी में तुमने वीएमआर लिखा है इसको. वो क्योंकि अभी वो पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा है ना, तो है मतलब वो स्टिल वाटर के हिसाब से देखा जाए तो रिवर, तो वाटर स्टिल स्टिल के वाटर का क्या मतलब हुआ? मतलब जब वो रिवर हिल रही नहीं है. तो रिवर कैसे नहीं हिल रही है? रिवर तो हिलती है. हाँ कभी तो नहीं, बिना रुकी हुई रिवर देखी तुमने? नहीं सर. फिर ये कैसे लिखा तुमने? क्या सोच के लिखा है वो बताओ मुझे. सर वो मैन और रिवर था ना, तो मैंने एम और आर ऐसा देख. नहीं नहीं, मैंने गलती बोला है. ये भी ठीक है. ये भी ठीक है. एम और आर था इसलिए मैंने मैन और रिवर देख के बोल दिया. वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. अच्छा एक बात बताओ. स्टिल वाटर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टिल वाटर? ऑल ऑफ यू टेल मी दिस. आप लोग को क्या वेलोसिटी उसकी जीरो है. स्टिल वाटर का मतलब क्या हुआ है? Velocity of river is zero. कभी देखा है वेलोसिटी ऑफ रिवर जीरो? No, sir. So the water is stagnant, it doesn't move. Stagnant doesn't move. So you have seen stagnant river, ख्याति? River का No, sir. मतलब ही river always flows. Yes, sir. So a car moving with 120 kilometers per hour, it will always move, yes or no? You'll always see it moving, yes or no? Yes, Yes, sir. sir. All of you. Pranav, tell me, when will the car moving with 120 kilometers per hour will come to rest with respect to you? Sir? सुनाई देता है कुछ तेरे को? Sir, जब भी can सवाल पूछता हूँ इसको पहली बार समझ नहीं आता है. no, फिर से. When will you see a car with respect to you, car moving with velocity 120 kilometers per hour at rest
with respect to you? When will it be at rest with respect to you? So I can't understand the question. कोई बात. Anybody else who understood it? अभिख्या जी बताइए. Sir, When sir, will a car moving with velocity 120 kilometers per hour will be at rest with respect to you? This is the question. Sir, when we are inside the car, I guess. हाँ देखो ये बोला ना इसने. When you are sitting inside the car and even if the car is moving with whatever velocity it wants to move, the car is always at rest with respect to you. Yes or no? Or the car is still with respect to you. Yes or no? yes, All of you. अरे बोलो हाँ या ना. Yes, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो. ईशान सर ये प्रसाद. 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में था. तक कुछ नहीं है. 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक जबरदस्ती 6th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है. मतलब 6th या 7th. किसी को कोई नहीं है अभी तक तो नहीं पढ़ा है तूने. चल छोड़ दे. जबरदस्त. तो ये पर कॉमन सेंस है. इसके लिए स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक में लिखना जरूरी नहीं है. इफ यू आर मूविंग सो द क्वेश्चन इज माय क्वेश्चन टू यू वाज a car is moving with a velocity of some, so this is the car which is moving with a speed of, इसके चक्के कार से बड़े हो गए हैं. कोई बात नहीं होने दो इसको बड़ा. कार नहीं गिरेगी. टॉपल. चलो पांच. ठीक है. ये कार है हमारी. चलो बहुत बढ़िया कार दिखा. तो ये कार जो है इधर जा रही है. ठीक है. दिस इज मूविंग विथ a स्पीड ऑफ 20 meters per second. So to a person sitting inside the car will be at rest. ठीक है. I hope all of you understood this. So now if I say velocity, now this man is walking in this direction with a velocity of 10 meters per second. And I write velocity of man with respect to still car is 10 minus I cap. Of course, meters per second. 10 meters per second minus I cap. Right? What will you say? What will you understand by this? Who is observing this man moving with 10 meters per second minus I cap? Sir, the man Sir, inside the car. inside the car. So the man वाला inside the car. आदमी. So can I say velocity of man with respect to car? Because car is still only when you are inside the car, right? So to a person inside the car, this man seems to be moving with a speed of 10 meters per second minus I cap. So V man with respect to car is what? It's 10 minus I cap. Got it? You understood what is V man car now? All of you? Yes, sir. Yes. Anybody is having any challenge in understanding this? Jagannath, you understood or not? Yes, sir. Sir, can you once explain this? You understood still car, Tanvi? Anvi, sorry. No, sir. अरे भाई कार तुम्हारे रिस्पेक्ट में स्टिल कब होगी? कार 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है अनवी. ये कार तुम्हारे रिस्पेक्ट में स्टिल कब होगी बताओ? कार चेंज नहीं होगी. कार इज गोइंग विद 10 meters per second, 20 meters per second. When will it come to rest with respect to you? सर अगर अंदर बैठी हूँ तो then कॉमन सेंस है ये तो. मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है ये कि जब आप कार के अंदर बैठोगे तभी कार आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होगा. हाँ या ना? yes sir. इसमें कोई और कुछ पूछना है तुमको? कार के ऊपर बैठ जाओ. अंदर नहीं बैठना है तुम्हें. कार के ऊपर बैठ जाओ. तो कार रेस्ट पे है या नहीं तुम्हारे रिस्पेक्ट? Yes sir. है ना? तो कार इज नाउ with respect to you, car is still. That's why we mean by what this is what we mean by still car. So velocity of man with respect to still car is 10 meters per second minus I car.
So what will you write this? Velocity of man with respect to car. Car is still only when the observer is sitting inside the car. So with respect to car, we get velocity as 10 minus I cap meters per second. I hope you understood this. Yes, sir. Yes, sir. अरे अनवी से पूछा है, तुम लोग को तो समझ आ ही गया था पहले। अनवी जी समझ आया आपको कि नहीं आया? Yes, sir. ईशा, ईशा Yes, sir. समझ आया बेटा? Yes, sir. और धीरेन? Do we have to write this? नहीं नहीं, अभी रुको रुको। धीरेन रेड्डी कहाँ है? Yes, sir, I understood. तेरा कैमरा क्यों नहीं ऑन है भाई? Sorry, sir. बिजली लगती है उसकी? उसका इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगता है, चालू करो उसको। चलो, तो यहाँ पे what do we mean by this now? Velocity of man in still water. So we have to make the water still. What do we have to do now? We have to make the river water still. So what do we do that? How do we do that? Oh, sir, So we will also move with 3 kilometer per hour in that तो direction. पानी के अंदर क्या करना है? एक प्लैंक उतार दो। प्लैंक समझते हो? लकड़ी का एक फट्टा, ठीक है? A plank, wooden plank, right? And sit on this plank. Now what is plank doing? Plank is flowing with the river. It will flow with the river. It will drift with the river. So, and now you sit on the river. Sorry, sit on the plank. With respect to you, water is still, yes or no? All of you. Yes. Yes, sir. Yes, sir. With respect to this Yes, sir. person, let's name this person as Q, this person as P. So P is the man standing on the ground and Q is the person sitting on the plank, right? So now with respect to this person, the man seems to be moving in which direction? Along this line, yes or no? That is VMR. समझ आया बेटा? Sir, this part can you tell again? No. VMR तो But पता ही है ना? VMR तो हाँ, ये था ही पहले से, उसको पता करना, उसको बताना क्यों है मुझे? यू आर ऑलरेडी अवेयर कि VMR है ये। नहीं ये P, Q और P के रिस्पेक्ट में जो आपने अभी अरे Sir, we क्या, are. P तो पहले ही बता चुका हूँ। P के रिस्पेक्ट में मैन इज गोइंग फ्रॉम A टू B। एंड Q के रिस्पेक्ट में इट इज गोइंग, तो अब बचा क्या? अच्छा अच्छा बस कॉमन सेंस से दुश्मनी करनी है क्या? So the man is going along this line, that is VMR, right? All of you understood? Hello. Yes, sir. So यस Q observes that this man, ये जो red dot है, it is moving along this line. This is observed by Q, but P कैसे observe कर रहा है? P is observing it that the man is moving along this line A to B. ये इधर जा रहा है. Understood? Yes, sir. The A to B is observed by P. A to in this direction, it is observed by Q, right? So now you have to find phi. यहां तक किसी को डाउट है तो पूछो. Anybody is having any doubt in this? ख्याति, मनोगना, मिशिका, अन्वी, Yes, sir. धीरेन, Yes, sir. नीलाब. ये सर समझ में आया. So now we have sine phi. We have sine phi as magnitude of VRG is how much? 3. Magnitude of VMR is how much? 4. So it's 3 over 4. Or phi is sine inverse of 3 by 4. Units are same, kilometers per hour, so I am not writing units here. So this is the angle at which the man should swim to reach point B. ठीक है, नोट करिए इसको. फिर भी अगर तुमको कुछ लगता है तो एक बार just go through it once. If you find it difficult to understand, ask me. I'll explain it again. This is very important. Huh? Sir? Sir? बोलना, सुन रहा हूँ.
अच्छा हाँ, वो डाउट था, वो जो थर्ड वाला इक्वेशन है ना, वी वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो लाइक वो मैन पी का है क्या? अरे तुम क्या पूछना चाह रहे हो? फिर से पूछो, VMR पूछना चाह रहे हो? हाँ, तो लाइक यहाँ पे एम अरे वो कौन तो है? होता ही है ना अरे मैन है, मैन अंदर वाला जो आदमी जो तैर रहा है। अरे भैया, अच्छा ये दोनों, अच्छा अच्छा अरे अच्छा अच्छा। मुझे लगा यार। बाहर वाला खड़ा हुआ ना अरे मैन। बाहर वाला क्यों होगा? किसको देखना है मुझे? बाहर वाले तो देख रहे हैं उसको। ये आदमी दिख रहा है तुमको, ये तैरता हुआ हाँ आदमी हाँ पानी के अंदर। ये है हाँ। मैन, ये है ओके एम। ओके पूरी ओके। बाप, पूरी रामायण खत्म हो गई, कह रहा सीता किसका बाप है। अरे माता सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी है, प्रभु श्री राम की। तुम कहाँ ये सब? सर इतना मत बोलो सर, मैं डर गया। लिखो। सर मेरे को वो पी और क्यू के रिस्पेक्ट से वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो मेरे को समझ। अरे तुम, मतलब क्या? पूरे क्लास में यही समझा रहा हूँ बेटा मैं। मतलब वो अरे क्यू के रिस्पेक्ट में उसको वो ऐसा ऐसे जाते हुए कैसे दिख रहा है? ऐसा एबी में जाते हुए क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों दिखेगा वो तो पी को दिख रहा था। पी का समझ गया लेकिन क्यू का नहीं अभी तो समझा। तूने बोला पी भी समझ नहीं आया। नहीं, अभी मेरे को पी समझ गया लेकिन क्यू नहीं अरे जब समझ। एक का पी हो गया, एक का ए बी हो गया, तो दूसरे का क्या होगा? लेकिन क्यू को ए बी क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों दिखेगा? वो रिवर में है, उसकी वेलोसिटी है आगे की ओर। ओह अच्छा। अनपढ़ है क्या बे? इतनी देर से क्या समझा रहा हूं तेरे को मैं? क्लास में बैठ के दिमाग थोड़ा कंसंट्रेट किया करना। ये ये समझ ये गई। ये क्या पंचायत की थी मैंने यहाँ? हाँ वो अभी मेरे को एकदम ही गधा हिस्ट्री बच्चा टाइप करता है भाई। समझ। Sir, बोलो। isn't it a little interesting that you're naming the people Q and P? Sir, this reminds me of the case I read today in my ethics club, Moniker क्या? Morality. Sir, this reminds me of a philosophical ethics case that was taken up today in the club, Moniker Morality. How people should name their child with respect to religious sentiments. So ओके। this is like, for example, Elon Musk has named his newborn son कुछ एक्स A12 square ऐसे कुछ नाम दिया है. क्यों? Sir, see, everybody loves their child, mostly. हम्म So, so they always want good hopes for their child in the future. Like for हम्म example, Elon Musk, the letters A E in the child's name symbolize AI because it is a very growing because it's a growing हम्म technology in today's world. ठीक So है। it is very हाँ। so, sir, naming someone P, हम्म it would be a little awkward. However, many countries in the world allow people to be named if they fall under the 26 letters of the English alphabet, which is हम्म। why Elon Musk's name, which is why Elon Musk's son's name went from XAE12X to just X. अच्छा। So, sir, maybe it would feel awkward for P and for Q. हम्म। You know, sir, the religious sentiments and cultural sentiments really build up.
But since this is physics and we are just considering them as half alive, half dead, I guess, so we shall go with it. हाँ, इसलिए nobody, we are not hurting anybody's sentiment, neither we are binding anybody's with this sentiment. Yes, sir. So it works. Yes, sir. चलो लिखो इसको. ये समझ में आया था कि नहीं? All of you noted this. Please type done if you are done with this. Done, sir. Ishan, you understood or not? Khyati, Ishan, Yes, sir. Mishika, Sakya. Yes, sir. सर सर डाउट नहीं है बोलो. सर. आपको पता है मेरे पास एक पैरेट है हम्म. और वो ऐसा केज के अंदर नहीं होता है. हम उसको बंद करके नहीं रखते हम्म. और वो येलो कलर का है. अच्छा. नहीं, आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगा? बहुत इंटरेस्टिंग है, पर ये सब तुम उसी से सीख रही हो. ही इज अ बैड कंपनी फॉर यू. ये तोते की तरह टपर 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 करते रहना है. एक्चुअली वो मेरे से ज्यादा शांत है. थोड़ा पूरा दिन सोया रहता है. बताओ बताओ. चलो लिख लिया सबने? ऑल ऑफ यू नोटेड दिस और नॉट? हेलो हेलो Yes, हेलो. sir. Yes, चलो, sir. वेरी गुड. Very good. Now, coming back to, so you understood. So the entire objective of my discussion was to learn, to make you learn what do you understand by velocity of man in still water. So it is velocity of man as observed by a person who is in still water, who is flowing with the river, who is moving with the river. तो ये प्लैंक के ऊपर बैठ जाओ और देखो कि रिवर स्टिल हो गई या नहीं हो गई. तो अगर रिवर स्टिल हो गई है, ऑब्वियसली रिवर स्टिल हो जाएगी. तो देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग द स्विमर. ठीक है, दिस इज द स्विमर. यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक छोटा सा स्विमर, ताकि तुमको आइडिया रहे कि स्विमर कौन है यहाँ. सो दिस पर्सन इज द स्विमर हियर. ये स्विम कर रहा है, देखो ऐसे. ठीक है. अब नाउ लेट्स डिस्कस. तो यू अंडरस्टूड दिस ऑल्सो, राइट? ये भी लिख लो एक पेज में ना. यू विल अंडरस्टैंड दिस. नहीं तो याद रहे, नहीं याद रहेगा. लिख लो ये भी. दिस इज द मैन. दिस पर्सन इज द ऑब्जर्वर इन स्टिल कार. सर ये लिखना है? Yes, you have to write. Okay.
So if you have noted it, shall we move ahead? Yes, Yes. sir. Sir, also the letters in your name are more than the letters in observer in Silkar. Just noticing, sir. Sorry, कुछ नहीं सर. कुछ तो बोला तूने, मुझे समझा नहीं, बता, मैं भूल, मतलब मैं मिस कर गया. Anyways, चलो आओ. तो अब now this is the river. Now what we are trying to find here is, in this case, again this is river swimmer or river boat problem only. ठीक है. और इसमें what we will try to find out is, we will try to find the time taken by the man or swimmer, in this case swimmer, we will call it man. ठीक है. To cross the river. These are the two things which we will discuss, and also the horizontal drift. Now, what is drift? So, drift is the river will drift you, right? In this case, there was no drift. Why there was no drift? Because the man was making some angle with the vertical, and the river drifted him on this line only. So, technically, there is no drift. Drift का मतलब होता है, what is the distance from point B the river has pushed this man. So this will happen only when the man may travel along this direction, and then the river is pushing it along this line, pushing the man along this line, and this line will be the line where he will reach. So exactly not on the opposite side of the bank, but making some angle from it, right? So Sir, that is so what he is is not making angle in the starting. He is going in a straight line and getting not necessarily a straight line. He may be making some different angle than what we found. अच्छा. Okay. So coming back to this point, so these are the river banks. Please pay attention. I can understand कि कल तो संडे है, कल तो कुछ कहीं जाना नहीं है. तुम ध्यान से सुनो सब लोग. ये ठीक टाइम मिल गया तुम लोग को पढ़ाने का. This is AB, right? The man started swimming along this line. The man started swimming along this line, and this is velocity of man in still water. So it is VMR. Always remember this. Velocity of man in still water is VMR. ये भी लिखवाया है मैंने. ठीक है. Now, this velocity is pushed along this direction. This man is pushed by the river in this direction. So river is flowing with this velocity. This is velocity of river with respect to ground. Now these two velocities, when they are added, it seems that the man is moving in this direction. Velocity of man with respect to ground. This is the man who sees it along VMR. This is the man who sees it moving from A to this point C. समझ आया नहीं आया? All of you. Yes, Yes. समझ आया. Yes. This length BC is velocity of man. Sorry, not velocity. This is the horizontal drift. X is the horizontal drift, right? So you have to find X, and also given is the width of the river.
तो width of the river D दिया हुआ है. So this is given to you. So AB is the same as the width of the river? और कुछ हो सकता है क्या? नहीं. फिर भैंस को दिखा के पूछती पापा को, पापा ये भैंस है क्या, बार बार पूछती. नहीं सर. फिर जो ऑब्वियस है उसको मैंने क्यों पूछना है? आपको तो पहली बार पूछ. अरे पता तो है ना तुझे, पर मुझसे पूछेगी कि भैंस को दिखा के सर ये भैंस नहीं है क्या, सर. मुझसे पहली बार पूछेगी तो. नहीं. अरे भाई कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती है. सुनो ध्यान से, इधर आओ. जो ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट है उस पर ध्यान लगाओ. ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. इसकी बातों पे मत जाओ. दिस इज थीटा, राइट? सो व्हाट डू वी नो हियर इज, व्हाट वी आर अवेयर अबाउट इन दिस क्वेश्चन इज, वी नो थीटा. ये जितना ग्रीन टिक लगा, वी ऑल ऑफ us are aware about it. VMR, velocity of man in still water, VRG and D. So these four things we are aware of. What do we want to find? We want to find this x. We want to find this x, and also we want to find this time taken. Okay. So these are two things which we want to find. Now, first thing what we will do, it's the same thing what we did in projectile motion. If you remember, first thing what we did was we wrote all the velocities as a sum of their components along x and y axis. We wrote all the velocities as a sum of its components along x and y velocity. So VMR, this is VMR. The component of VMR is VMR sine theta minus I cap and VMR cos theta plus j cap. Yes or no? I'll write it here. Jagannath, you understood or not? Sir. VMR sine theta minus I cap. Manogna, what about you? Understood, sir. Okay. धीरेन, समझ आ रहा है? Yes, sir. है कि नहीं धीरेन रेड्डी? हाँ है. So this is these are the components. This is how we can write VMR. Anybody is having any doubt in finding the components, please ask. Nilab, understood? Yes, sir. Pranav, you understood or not? Yes, sir. So now from here onwards, we know what is VRG then. We can also write VRG. VRG is VRG plus I cap. We are taking, हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया. We are taking this direction as x axis, this as y axis. VRG I cap. Now everything is happening in ground frame of reference. X is in ground frame. Time is also, we are finding time in from this frame only, right? So एक मिनट. सर लेकिन टाइम तो हमेशा सेम रहेगा ना, ऐसा कोई. टाइम तो सेम रहेगा, पर निकाल किस फ्रेम से रहे वो तो इम्पोर्टेंट है ना. लेकिन फ्रेम अलग हो जाए ना तो भी टाइम तो सेम अरे रहेगा. तो फ्रेम, अभी तो फ्रेम चाहिए कि नहीं? अच्छा. दिमाग छोड़ के आती हो क्या बाहर कमरे के? चाहिए सर. अरे अभी तो कोई फ्रेम चूज करना पड़ेगा ना. हाँ सर. अरे बाप, कहाँ तुम लोग. सो VMG ये हो गया, ठीक है. तो व्हेन वी ऐड दीज टू, इट्स VRG minus VMR sin theta I cap plus VMR cos theta J cap. I hope all of you understood this. Yes or no? Sir, of course we understand. Anybody is having any doubts in this, please ask. VMR plus VRG is VMG. We have already written it multiple times. Here also we have written it, right? So you can understand. Now, Isha, you understood or not? Yes, sir. Now, oh,
displacement of man with respect to ground is AC. AC is displacement of man with respect to ground. So this is VRG minus VMR sine theta, or I should write it as VMG into time, isn't it? Hello. Yes, sir. Yes. It's velocity into time, right? Displacement. Now, can we write this also as dj cap plus xi cap? dj cap plus xi cap. Can I write it like this? AC vector. Yes. Yes, sir. All of you. Yes, Everybody. sir. Isha, Pranav, Mishika Shakya, Vihan Verma, Dhiren Reddy, Yes, sir. Yes, sir. Nilab, Anvi Yes, Sharma, sir. Khyati, Jagannath. Yes, sir. So I hope all of you understood that AC vector can also be written as dj cap plus xi cap. Now substitute the value of Vmg from here. It is Vrg minus Vmr sine theta into t I cap plus Vmr into cos theta into t j cap is equal to x I cap plus t j cap. Clear? Yes. Yes, sir. Anybody is having any doubts in this? I have just simply substituted the values here. बोलो भी बच्चों, कोई डाउट है क्या? No, sir. Nice. Oh, Now, two vectors are comparable or equal. Two vectors are equal only when their components are same. So the green wala components are same. Similarly, this one, VMR cos theta and D, they are same. They can be equated. By same, I mean they can be equated. Right? From here, we get VMR cos theta into T is equal to D. तो T की वैल्यू क्या हुई? It's D upon VMR cos theta. Yes or no? yes, sir. Yes. This J component is equal to this J component. So VMR cos theta T is equal to D. Now what about this one? It's VRG minus VMR sin theta into T is equal to X. So this is how you get X here. Wait, this X, how you want? ठीक है, तो X की वैल्यू क्या मिली बेटा यहाँ पे? You know VRG, you know VMR sin theta, and you also know T. What is T? It's D upon VMR cos theta. समझ आया बच्चों? I see the light. You see the light? Very good. Sir, can you tell again how X you got V R with respect to G minus V M R sin theta into क्या T? क्या? X ये V R G minus V M R अरे sin. ऊपर जो ग्रीन ग्रीन कर रखा है, ग्रीन कर रखा है कि नहीं कर रखा है? हाँ वो हाँ. सेम है या नहीं है? वो सेम है कि नहीं है? अच्छा अच्छा. मतलब अभी 5 बार बोला होगा कम से कम मैंने, 5 बार. उसके बाद यस और नो बुलवाने का तू नहीं, 2 4 5 बार यस बोला है, फिर आखिरी में नहीं जाके नहीं पूछता मैंने यस नहीं बोला, मेरा नेटवर्क इशू चालू था एक्टिविटी थोड़ा.
तो भाई नेटवर्क ठीक करके बैठा करो, 5 बार से ज्यादा नहीं बोलना। हाँ Sir, ऑल sir, the ऑफ यू। हाँ numerical पूछो। value for velocity or d or VMR, so we can't get a numerical value of x. If you will have, see, all these values are given. By that I mean that the numerical values will be given to you. All those green ticks in the question, can you see green ticks? Yes, sir. All those values are given to you. So In the can you see question. all the values? In the question, you will be given that, Okay, sir. right? Then only you will be able to find a numerical value, no? Or else how will you find the numerical value? We are doing it with general representation, right? I am not specifying it to a value. If I'll derive it for a value, it will not be a generic expression. Yes or no? Yes, sir. Now I this thought becomes a generic expression. deriving for a numerical value, but we don't Ah, know any values. yes. So now what did you learn in this? You learn what is horizontal drift. You learn what is velocity of man in still water, right? You learned how to use the relative velocity concept, right? And you also are aware how to compare two vectors when they are equal, how to compare the components. That is what you used here. So just go through it once, right? Once, twice, thrice, as many number of times you want to go through it. And then once you are convinced that yes, everything is what you are able to understand, then you start writing. And you have to practice this for next 2 days before your Monday session, right? You have to Yes. do it multiple times, starting from the beginning, starting from this page to this page. ये इतना इंपॉर्टेंट है, तुम इसकी इंपॉर्टेंस आज नहीं समझोगे, पर जब तुम 11th में आओगे तो इसमें तुम क्लास में 10 ड्रॉप आउट तो इसी इसी चैप्टर इसी टॉपिक के बाद हो जाते हैं। बच्चे कोचिंग छोड़ के भाग जाते हैं फिजिक्स नहीं पढ़नी करके, समझ आ रहा है? सिर्फ इस टॉपिक के बाद। तो इसलिए जो तुम पढ़ रहे हो और तुम समझ रहे हो इतना, अपने आप को बहुत बहुत बधाई दो कि तुमने बहुत कमाल काम किया हुआ है। Don't get with the Okay, noted all of you? No, sir. second. No, sir. Yes, sir. Okay, those of you who have not noted, you can take a screenshot, you can write it later. Asked only I'm doing. Take a screenshot on a count of 10, on a count of 3. 1, 2, and 3, right? You can write it later. I'll share the notes also of today's session, so don't worry. So now, before Monday, you have to practice it multiple times, at least 5 times. Think of it. What is velocity of man in still water? Why it is still? विहान, तुम जा रहे हो तो ये सब सोचना है तुमको। तो तुम्हारे लिए Yes, तो sir. राफ्टिंग, when you will do the rafting, you will be able to understand
कि और तुम्हारे लिए तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाए। सर वैसे मैंने राइट। राफ्टिंग पहले भी किया है, बट यस सर, हाँ, आई पर अब अंडरस्टैंड। तो इसको पढ़ना, तब नहीं पढ़ा था ना तुमने। सर नाउ आई सी द फिजिक्स बिहाइंड इट। हम्म, शाबाश। तो सुपरमैन। सर आपको मेरा पैरेट देखना है? लाओ दिखाओ, वो भी दिखा लो तुम। देखो एक सर। एक सेकंड रुको। ये पीला है, ये पीला हाँ है। सर, वो आपको ऐसा बताओ। लाइट में दिख रहा है लेकिन बाप रे वो बाप। लाइट अरे एक सच एक में सेकंड, पीला एक है। सेकंड। हाँ, हाँ, सर वो सच में पीला है, सच में पीला है। तुम फोटो खींच के भेजो तब मानेंगे उसकी। हाँ हाँ, मैं अभी भेज हाँ, सकती सफेद हूँ। दिख रहा है, पीला कह रही है ये। बाप रे बाप रे बाप। अरे सर वो ये ऐसा सच में लाइट में अनपढ़ है भाई ये। सर कलर ब्लाइंड तो नहीं हूँ ना मैं, मेरे को दिखाई देता है येलो ऐसे। चल झूठी। सर चलो देखो नेचुरल ब्लश भी बाय, देखिए गुड बस। नाइट। कल बाय मिलेंगे, ठीक है। मंडे मिलेंगे, बट प्रैक्टिस दिस एटलीस्ट 5 times, ओके। एंड विहान, यस यू एंजॉय योर सर। ट्रिप। बाय। बाय रेस्ट सर। ऑफ योर गुड बाय नाइट। सर, थैंक मिलाप, यू प्रणव, सर। जगन्नाथ, हैव अ मनोरमा, नाइस ईशा, डे। अभिज्ञा, गुड थैंक यू नाइट। सर। थैंक यू।